Good morning. Good morning. Good morning, बच्चों. So please keep. Sorry, बच्चों. There was some. Can't hear you. Can you hear me now? There was some issue with internet here right now. Okay. So can you see me now, or can you hear me now? Okay. Yeah, so there was some issue with internet here. Audible as well. Very good. So if you're audible and visible, thank you. Okay, good. So now what we are going to discuss, here it comes. So this is the main chart जो हम डिस्कस कर रहे हैं. This is, hope you can see the chart. So फटाफट keep your pen and paper ready and please start making this chart,
because इसी के ऊपर now we will go into definitions of pure substance, element, compound, homogeneous mixture, heterogeneous mixtures, and if time permits, then we will go for solutions also. Solutions, in solutions also there are true solutions, there are colloidal solutions, so those can't hear you. I don't think there should be any problem from hearing, because sir, I will take screenshot and write afterwards. No, you write with me only. Don't take screenshot. Just write me only. I'm going to so that will be better, because I have no faith on all of you. You will write it on upwards or not. So please write this chart, and then we are going to see definitions one by one. Because sir, I don't have my notebook with me. Why don't you have notebook? कहाँ पे है? तो ये क्या, तुम क्या कोई वेब सीरीज देखने के लिए आया क्या ऑनलाइन? दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ, आप, इट इज एज गुड एज यू आर सिटिंग इन क्लासरूम. अगर मैं क्लासरूम में होता तो मैं क्या करता? आई वुड हैव ड्रॉन दिस ऑन द बोर्ड एंड देन यू हैव टू राइट ऑन नोटबुक. सो आई एम इन बारामती, सो व्हाट, so please draw this chart फटाफट. It's a classroom. You have to just whatever is on the board, please keep drawing it so that आपके concepts clear होते रहेंगे. Don't leave it for afterwards. मेरी क्लास में आपका सब खत्म कर दो ना, तो why you have to worry about कुछ. And my book is in the village, so you don't have to book, already it is on the board पे लिखा है ना, this is on the board, so you don't need book, you just need your pen and paper. You need just pen and paper to write down. Hope all other students are writing. Those who don't have books, please get it some notebook and pen and paper, start writing it. Make this table fast. तो ये टेबल बना लो आप लोग फटाफट. We don't have so much time. Anyone else has any issues, or please, so once done, sir, your voice is not coming. नहीं बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. यू जस्ट जैसे ये चार्ट आपका हो जाएगा, immediately type done, then we will move ahead. I'm not going to wait for all students. मुझे सिर्फ 4-5 students का done चाहिए, then I will move ahead. Those other students, they can take screenshot and do it later. I want to be with the pace of students. Sir, clear हो ऐसा? So there is some net issue. Don't worry, it will be resolved in just 5 minutes. Till the time, there may voice may break also in between. Don't worry. Whatever I am speaking, I'm going to put in on board. Don't worry about that. So you don't need anything. Even I am dictating anything, I will first put all words on the board so that you can write it. So homogeneous mixture. A solution depends on.
Very good. So many students have done. Prajwal Ponkle, what is Prajwal? Your doubt, Prajwal? You have raised your hand. You have any doubt? Please tell me. Yes, Shubham. What is your doubt? Yes, नहीं का doubt क्या है वो लिखो. Your voice is not clear. No, it is clear. You have to nothing do with my voice right now. Right now there is a chart which is in your board. You have to just write down that chart. And my voice is clear. Other students clear. You have may have internet issues. See, when you have internet issue, आपको मेरा screen नहीं दिखाई देगा, फिर मेरा voice नहीं दिखाई देगा, फिर मेरा board भी नहीं दिखाई देगा. So there has to be in proper internet connection if you want to have on the live class. So yes, so let's move ahead. Now, the things which we are going to discuss is about pure substance. So what is pure substance? So now we'll see the definition of pure substance. So let's move to the next page. Let's out the definition of pure substance. This is the definition of pure substance. So a pure substance, what is pure substance? If you see, a pure substance may be defined as a material which contains only one kind of atom or molecules. So this is definition of pure substance. So please write down this, the definition of pure substance. So this is what you mean by pure substance. A pure substance may be defined as a material which contains only one kind of atoms or molecules. Very good. Sir, writing big hand. Sir, write big handwriting. I think this is sufficient. इससे बड़ा लिखूंगा तो अब anyone else wants to some more big font, because I think there are sufficient fonts you can visible. Sir, bold it. Bold करते हैं ना बेटा. We'll try for the next. हाँ, ये जो pure substance है, this pure substances have two types now. And let's see what are those two types for that. ये कलर बराबर नहीं है. इसमें सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं. वाइलेंट जिसमें दो होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. So a pure substance which is made up of only one kind of atom is called an element, or while that which is made up of only one kind of molecule is called compound. I hope this is clear. No, this I have bold, made a bold font. If it's clear, please type clear. See why I am making you write all definitions. ये बहुत confusing हो जाता है. Right now भी आप सिर्फ mixtures पढ़ रहे हैं. Mixtures में आपने homogeneous पढ़ लिया, heterogeneous पढ़ लिया. But then we move ahead. जब हम solutions पढ़ते हैं, वहां पर again these same terms are going to repeat. Like जब मैं solution का definition बताऊंगा, वहां पे solution is a mixture करके आएगा. तो you should know what exactly pure substance is, what mixture is.
So you should not get confused there. So ye, hope you're done with this also. Now an element is made up of only one kind of atoms which are identical in all respects. ये ऑलरेडी ये डिफिनेशन आपने ऊपर देखा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर आइडेंटिकल इन देयर रिस्पेक्ट्स ऑफ देयर साइज, mass, composition, etc. However, the atoms of elements differ from size, mass, and composition of others and composition. होप ये इससे आपको कुछ याद आया होगा, जो वो इनसाइड एम एटम हम डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, वहां पे डाल्टन ने प्रपोज किया था, you know, the elements they with the different elements have different size and shape, while as the elements of same जो same elements हैं, sir, we have to write in pure substance point only. Yes beta, it's in that only. Pure substance में elements define हो रहा है अभी. Pure substance में दो आते हैं, element और compound आते हैं. हम element के ऊपर थोड़ा और देख रहे हैं. element क्या है? An element is made up of only one kind of atoms, जो आपने already ऊपर definition लिखा, which are identical. They are identical in their all respects of their size, shape and composition. However, atoms of elements जो अलग element है, differ करेंगे. जैसे अगर मैं आयरन का एलिमेंट लूंगा एंड आई विल टेक कॉपर, तो उन दोनों के जो एटम्स होंगे दे मे विल नॉट बी आइडेंटिकल, दे विल बी डिफरेंट. दैट्स व्हाट इट इज स्टेटिंग. देयर कंपोजिशन, देयर साइज, एवरीथिंग विल वेरी. देयर आर सम सॉलिड एलिमेंट्स में भी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले जो है वो है आपका तो देर आर सॉलिड एलिमेंट्स. तो जो है सॉलिड एलिमेंट, जो मेजॉरिटी हैं, दे आर सॉलिड एलिमेंट्स ओनली. मेजॉरिटी जो हैं दे आर सॉलिड एलिमेंट्स ओनली. So right now we are seeing the definition of solid elements. Solid elements. अभी हमने एलिमेंट पढ़ा. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग. होप माय वॉइस इज नाउ क्लियर. Parth, you have to check your internet, because if I am audible to other students, so I have to be audible to you. So if you have internet issues, so you won't be able to hear me or even see me. So solid elements. नो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया. एलिमेंट क्या होता है हमने देख लिया, जिसके आइडेंटिकल साइज, जो एटम्स होंगे उसके आइडेंटिकल होंगे, मास भी, कंपोजिशन भी, सब कुछ. लेकिन अभी एलिमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें सबसे पहला टाइप है सॉलिड एलिमेंट्स. यू नो द एलिमेंट्स दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड. वेरी गुड, डन. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. मैं अपना ये कंटिन्यू करता रहूंगा. सो डोंट टेल मी टू सर पीछे का पेज दिखाओ. यू टेक स्क्रीनशॉट, आई डोंट माइंड, but we are moving ahead.
and in the end you have to submit me all these notes. So let's see next. So next हमारा after seeing solid there are some liquid elements also. Can some of you name me what are those liquid elements? ये हमने पढ़ा है already. If you see हमने ये जब हम metals and non metals पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक examples भी दिए हुए थे. If any one of you remember. Yes, very good. Mercury, cesium, they're liquid. So liquid elements में क्या है? Mercury and bromine. और gallium and cesium भी become liquid at temperature slightly above room temperature, which is 303 K. So not only mercury, but as you see, there is bromine also, there is gallium also, there is cesium also. These all four come in the category of liquid elements. Although जो gallium और cesium है, जब आपका थोड़ा temperature is above, slightly above room temperature, then only they become liquids. So this is the example of liquid elements basically. Then there are gaseous state elements है कौन कौन से, if any one of you can guess. So these are 11 elements. They are in gaseous state at room temperature. So this is all about pure mixture. So pure mixture matlab, yes, chlorine, argon. Yeah, already I have put on the board. No, if you understand this pure substance matlab जो pure है, जिसमें कोई भी कुछ प्रकार का and they are all alike. हमने definition देखा elements में solid, liquid and gas का. और इफ आई हैव टू टेक, मुझे एग्जांपल बताओ कंपाउंड का, जो हमने देखा एलिमेंट एंड कंपाउंड. कंपाउंड का अगर हमने डिफिनेशन, इफ यू अगेन सी द डिफिनेशन ऑफ कंपाउंड में जो है विच while that which made up of only one kind of molecule, they are called compounds. compound में कौन कौन से एग्जांपल हैं? कैन समवन टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स? हमने देखा एलिमेंट्स में, हमने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, गैसेस एलिमेंट्स देखे. दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. सो कैन यू समवन टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स? नो. वेरी गुड. H2O. दे आर काइंड ऑफ वन मॉलिक्यूल. H2O से ही पूरा वो मॉलिक्यूल बनता. तो इसमें भी अलग अलग है, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा एंड सॉलिड भी होगा. ग्लूकोज, यस. NaCl. So these are all compounds. They are also in different states. And but इसमें क्या है कंपाउंड में? They have same kind of molecule. While as those elements, जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं, उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं. That is the only difference. But different elements के atoms vary करेंगे in their size, composition, properties. Similarly, molecule, Radhe Shyam joined. Okay. So very good, very good. So let's move next. Now we will see mixture. We will study about mixtures.
So a mixture is what, so you can see, युगंधर आई हैव क्लियरली टू, डोंट टेल मी, मुझे प्रीवियस पेज दिखाओ, आप स्क्रीनशॉट लो, जितना आप मेरे साथ लिख सकते हैं लिखिए, एंड यू टेक स्क्रीनशॉट एंड डू लेटर ऑन, नहीं तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज सो ए मिक्सचर इज ए मटीरियल। क्या है डिफिनेशन देखिए मिक्सचर का, भी हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं। ए मिक्सचर इज ए मटीरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकते हैं, which do not react chemically but are partially mixed together in any proportion. सो फर्स्ट डिफिनेशंस को क्लियर करो, आपका ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर क्लियर करो, क्योंकि अभी नेक्स्ट में अभी पढ़ाऊंगा आपको सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन में आता है सोल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर, तो दिस वर्ड इज अगेन रिपीटेड देयर, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, अरे ये सोल्यूशन में मिक्सचर कहां से आ गया, why I am telling you, because students get confused in their case, that cases, so better you should know the, that's the reason मैं आपको लिखवा रहा हूँ हर एक चीज, लिखो इसको ही फटाफट, so that जब भी आपको डाउट हो, immediately open your notebook, refer your definitions, immediately you will get clear understanding. अभी जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स में दो टाइप हैं, होमोजीनियस है और हिट्रोजीनियस है, तो नो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स, और फिर उसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। This was all about mixture, then now let's study about homogeneous mixtures. Examples we will see. First you write down the definition. अगर सबको यहां तक एवरीवन इज विथ मी टिल हियर, प्लीज राइट होमोजीनियस मिक्सचर, टाइप करो होमोजीनियस मिक्सचर। Very good. So a mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there is no boundaries of separation between them. In other words, a homogeneous mixture consists of one phase, एक ही phase होता है। The single phase of a homogeneous mixture may be liquid भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो लिख लीजिए ये डिफिनेशन भी फटाफट। होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन हम लिख रहे हैं अभी। नाउ आपको ये जो डिफिनेशन हमने लिखी, आपको और क्लैरिटी मिलेगा जन नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर बहुत सारे, कभी लगता है बच्चों को, अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ओनली इट कैन बी, जैसे अभी ऊपर किसी ने एग्जांपल मुझे दे रहे थे बेल या सॉल्यूशंस का, डन। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स देयर विल बी मच क्लैरिटी कि कैसे होमोजीनियस मिक्सचर लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, इट कैन बी इन ऑल थ्री। सो पहला है जो है एग्जांपल इज सिंपल एग्जांपल वन, तो मैं ले रहा हूँ व्हाइट डू नॉट चेंज कलर। फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये किसमें, ये एग्जांपल है लिक्विड फेज में। तो दीज आर
राजधानी पटेल. So this is a liquid phase जिसमें liquid में इसमें homogeneous आता है. Then there is some more example which is about miscible liquids. Miscible liquids मतलब which can be easily mixed. तो वो भी homogeneous की कैटेगरी में ही आते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे solution of alcohol in water, वो भी एक homogeneous mixture ही कहलाएगा. नहीं तो अगर आप देखते हैं केरोसिन, डीजल, they are all mixtures of some liquid hydrocarbons. तो फर्स्ट हमने कौन सा एग्जांपल देखा? हमने देखा एग्जांपल जो एक लिक्विड फेज में है, क्योंकि हमने देखा कि होमोजेनियस मिक्सचर्स मे बी ए सॉलिड, ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज आल्सो. सो राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज वी आर सीइंग इन द लिक्विड फेज. उसमें हमने पहला एग्जांपल देखा ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. दूसरा एग्जांपल उसमें है ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स इज आल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर इन लिक्विड फेज. उसमें एग्जांपल हमने देखा अल्कोहल इन वाटर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है. सिमिलरली पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल, डीजल स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, DIESEL है, आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ नंबर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनते हैं, जैसे अब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हम आगे पढ़ेंगे, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन. सो दे आर ऑल नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. वेरी गुड. सो आई एम to the next page. Now we'll see homogeneous in example of gas. So please, I request others to take screenshot or whatever, download, because I'm moving to the next page now. Okay. So हमने देख लिया. So now we'll see air. So this is in example of in air. Air is a homogeneous mixture. अगर आपको बोलेगा air क्या है, air is a homogeneous mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, inert gases, water vapor. Then solid phase में हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल एक. Solid phase में alloys. Alloys are homogeneous mixture of two or more metals in solid phase. So this was all about homogeneous mixtures. Now there is very important concept now about heterogeneous mixtures. जैसे अगर आप हमारा चार्ट देखेंगे, जो हम चार्ट पढ़ रहे थे, इस चार्ट में हमने क्या देखा? प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने क्लियरली डिस्कस कर लिए क्या होता है. फिर एलिमेंट्स में ऑब्वियसली मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इसलिए मैंने इनको रिपीट नहीं किया. फिर मिक्सचर में है इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा, जिसमें हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स देखे. और अभी हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर के ऊपर जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स. आखिर ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? This is about heterogeneous mixtures. The mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixtures are not thoroughly mixed and there is visible boundaries of separation between them. So that is known as heterogeneous mixtures, जिसमें
बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी दे सकते हैं जो आपको दिखता भी है. ये heterogeneous mixture is very commonly visible. So let's write some examples so that is much more clarity comes. So now we'll see example of heterogeneous mixtures. फर्स्ट एग्जांपल is a mixture of sugar and sand. अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे, अभी डिफिनीशन देखो, ये एग्जांपल के बाद आप वापस डिफिनीशन पढ़ो. A mixture is said to be heterogeneous if the component of the mixture are not thoroughly mixed and there is a visible boundaries of separation between them. तो जब आप शुगर और सैंड मिक्स करेंगे, आपको इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज ये शुगर है और ये क्या है, ये सैंड है. यू कैन इजीली सेपरेट देम जस्ट बाय योर विजुअल आईज. यू कैन actually make that difference. And then there is more something known as iodized salt. Iodized salt. Iodized salt is about sodium chloride containing about 0.01% of sodium and potassium. और आपको पता होगा ये जो सोडियम पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है इसमें, देयर इज सम डिजीज जो होता था पहले, बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड टू ऐड सोडियम क्लोराइड में दे यूज्ड टू ऐड सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड इन द सॉल्ट सम परसेंटेज, व्हिच इज अगेन इट इज ए मिक्सचर, इट्स ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. उसमें ऑब्वियसली ये उतने स्मॉल क्वांटिटी में आपको दिखता नहीं है, बट इज देयर. देन थर्ड इज गन पाउडर. थर्ड इज गन पाउडर, which is mixture of sulfur, charcoal एकदम पाउडर फॉर्म में, पोटेशियम नाइट्रेट. देन लिक्विड में भी ये है, heterogeneous mixtures लिक्विड में भी है. उसका कैसे, एक सस्पेंशन ऑफ, जैसे चाक, जैसे सस्पेंशन आपने देखा होगा ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, लाइक चाक अगर आप मिक्स करेंगे मिक्स नहीं होगा, सस्पेंशन रहेगा. यहाँ सैंड पार्टिकल्स वो सेटल हो जाएंगे मिक्स करने के बाद. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ heterogeneous mixtures. एंड ऑब्वियसली देयर आर सम मोर लिक्विड्स जो heterogeneous एग्जांपल्स में फिट होंगी हमारी. वो है मिक्सचर ऑफ टू इमिक्सिबल. हमने ऊपर क्या पढ़ा था, मिसिसिबल भी पढ़ा था. ये इमिसिसिबल है, मतलब ये लिक्विड मिक्स नहीं होता, जैसे ऑयल एंड वाटर. ये भी heterogeneous मिक्सचर की कैटेगरी में आता है. इसको भी हम heterogeneous मिक्सचर कैटेगरी में गिनते हैं. होप यहाँ तक क्लियर है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क. यहाँ तक क्लियर है? इफ इट इज क्लियर टिल हियर, राइट क्लियर. And I hope you all have written these definitions. They are very important definitions, and please go through all these definitions again. And you can give me some more examples when you are writing your notes. Yes, written here. So then the next part is about solutions. Yes. So let's see the definition of solution also. So what is solution basically?
This is solution. Solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances, which whose composition can be varied within limits. So that is known as solution. See, इसलिए अभी ये एक पार्ट हमने कवर कर लिया बेटा. Now we are moving ahead. This is now, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले टाइम कुछ डिफिनेशंस लिखाई थी, जैसे सल्यूट, सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन. यू नो दिस इज द डिफिनेशन नाउ. A solution is defined as a homogeneous mixture. अभी देखो वापस ये homogeneous mixture repeat हुआ है. No, you should know the definition of homogeneous mixture. So that's how things have to be very clear. इसलिए मैं आपको वो हर एक का definition लिखा रहा हूँ, because हर एक no next definition will include previous some concept. So you should be very clear about that. So then in अभी आप बोलेंगे सर homogeneous mixture, फिर ये तो mixture में क्या फर्क हो गया, और mixture को हम फिर solution बोल सकते हैं, उसके लिए भी criteria है. That also you should be very clear. Here it is. So it may be noted that all the mixtures are not solutions. All mixtures are not solution. If mixture is said to be a solution, it must satisfy the following two conditions. पहला क्या है? The component of the mixture should be non-reacting, and second is mixture should be homogeneous. So all mixtures are not solutions. ये याद रखिए आप. While as all solutions are mixtures. So that is the reason मैं आपको एक एक का definition लिखा रहा हूँ, because it may get confused now. So जो भी all mixtures are not solution, while as reverse is true, solutions can be mixtures. जैसे हम बोलते हैं ना a square is a rectangle. हम बोलते हैं ना square is a rectangle, but a rectangle cannot be a square. In that mathematical terms, similarly, you know, all solutions you can call it mixture, but all mixtures are not solutions. If a mixture is to be called solution, it must satisfy these two conditions. पहला है कि the component of the mixture should be non-reacting, and the mixture should be homogeneous. Hope you have noted. इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे लेमोनेड लेंगे आप. लेमोनेड क्या होता है? लेमोनेड मतलब यू नो ड्रिंक, यू नो दिस ड्रिंक लेमोनेड. अगर मैं एक लेमोनेड एक गिलास ऑफ वाटर ले लूंगा, इसमें वाटर है, इसमें मैं लेमन डालूंगा, इसमें मैं थोड़ा शुगर या सॉल्ट डालूंगा, शुगर एंड सॉल्ट डालूंगा, और वाटर है इसमें, तो ये इसको मैं क्या बोलूंगा? So the four components of solution do not react with each other. अगर आप देखेंगे इसमें ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं. बस ऐसा नहीं कि ये लेमन शुगर के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना रहा है. So they are not reacting with each other. ये are just homogeneously existing here in this liquid, in water. They are homogeneously existing. इसलिए ये this comes in a kind of true solution. So time is already up. So I hope you have noted down यहाँ तक. We will इसके आगे हम पढ़ेंगे next time. So wishing you all the best. Take care. Bye.